the first paper book 1. May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं, एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी, फिर आपको इन सब पार्टीज को रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात, फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन तो ये आपका कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटीशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ईसीपी पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना। भाई आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे, बिल्कुल सही नहीं लिया। आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत दे दें साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है, अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था? जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे, उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से? ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, कब की बात है वो? ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूदीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, वो हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी बहुत। You know, but I'm just saying there is a history of thinking when you raise bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, you know, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी तो कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये राइटली कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। In view of this judgment, it is judgment in rem in my view. It's not personam.
उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी, वो जो 2017 के लॉ के तो इसका देखिए अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी, क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज। वैसे मुझे एक देखें बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारे दरवाजे तो खोद दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ? नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि भी मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता है। भी ग्रीवेंस, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा, ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें, पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन? अगर ये बात है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की। Then in future no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है जिस तरह। चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी, अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है मैं जरूर लिखता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट्स जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी। ये देखें, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें। देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन किया है कि ये क्या करें हम, उनको दे दिया राइटली सो। देखिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा गलत, मैं हमारे साथ क्यों गलत। हम एक और बात कर लेते हैं जी। मर्डर इज अ क्राइम, मर्डर इज अ क्राइम जी। एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ एफआईआर। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फौरन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहीं ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है। तो I'm giving these very basic things. It will not create a right in you.
you can take action against the ECP and say why are you doing this, or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है. मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है वो आप उस पे फोकस कीजिए ना. डिस्क्रिमिनेटरी ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है. लेकिन मैं अर्ज करूं एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. There can be a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है. यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए. अच्छा एक मई तक इलेक्शन कराने की इजाजत दे दी. एक मिनट रुक जाइए. जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, ANP कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? नहीं देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना. जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी. उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया. फिर आप ये भी ANP कर गया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस. मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंस. आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर. आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना. अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या PDM आ गए या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं. मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओगे, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें. हाँ ठीक. तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा. सर वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था. मगर आप लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं. नहीं मैं तो फिर एक्सरसाइजिंग पावर्स इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर. नहीं अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा यू विल अटेंड टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स व्हिच आई एम नॉट हियरिंग. द पॉइंट इज दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग ऑल पार्टीज इक्वली. वो हमें वी गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. जी. सो ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा. Discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं आप जानते हैं. नहीं मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं. मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to. मैं एक दफा contest किया है and that was stolen from me. I had won that. No ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात है, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता. मैं सर नेक्स्ट सबमिशन. No, sir, the way the intra-party elections they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on 2 judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. नॉट मैंडेटरी. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989 Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993 Supreme Court 473 Mian Nawaz Sharif's case.
this yesterday during the course of argument that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? Sir, this is Article 199, 1B, 1A, तो आपने 2. मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल. ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर करें. तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने. आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It's a settled law that yes, we seek declaration that their act is. Hey, what is the point? What is the 199 point? जी. Point ये है that I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. इसमें clause 2, declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my. अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province, they'll say we don't do this either, we don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But देखिए ना, declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है. इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is the ownership impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें, थोड़ा सा जल्दी करें. बस जल्दी कर देता हूँ. आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी. My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been... ये right वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो.
آپ کے جو 14 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ رائٹ ہمیں بھی دے دیجیے پلیز. جنرل الیکشن کی بات میں کر رہا ہوں بھائی. رائٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی ٹو پارٹیسپیٹ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے, آپ کا رائٹ ہے, وہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرا رائٹ تو دے دو پہلے, پھر آپ کا رائٹ آئے گا. رائٹ تو ابھی ہے نا کہ اگر ہی واز انٹائٹلڈ ٹو دیٹ, اگر وہ وقت پہ پہنچتے ہی نہیں, یہی تو بات ہے اصل. Why a person's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party? They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Alizaffar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP, time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship was saying that I should conclude early so that. Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again. But ये allegation आपने नहीं लगाया. देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody, making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Alizaffar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This may be a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed it's under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested the election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर सहमत का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर if it turns against his party, तो क्या वो पार्टी उसको रखने की कंपल्शन है? देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी तो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority, but subsequently with a lapse of time they became in a majority. So
یہ کدھر سے آپ ان کو کہہ رہے ہیں ممبر نہیں ہے؟ آپ نے کہہ دیا کافی ہے. میں آپ کو نہیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں ممبر؟ دو مثالیں دیں. کیونکہ آپ نے خود دیکھی تسلیم کیا ہے فاؤنڈنگ ممبر ہے, پھر کدھر سے چلا گیا یہ؟ نہیں, at some point in time he come a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. پرسوں ہی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. نہیں پرسوں کی بات نہیں کر رہے, کیس کی بات. نہیں آپ اس کا جواب دے دینا, آپ نے کس بیسس پہ تعین کیا ہے کہ یہ ممبر نہیں ہے آپ کے؟ اس کے اوپر پارٹی کا موقف آیا ہے کہ he was given show cause notice. دکھا دینا وہ شو کاز نوٹس. سر وہ تو لگایا ہوا ہے. کہیں نہیں لگایا. in any case. نہیں in any case نہیں دکھائی ہمیں. دیکھیے آپ ہم سوال پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں کیس. دیکھیے 205 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی ممبر کو نکالے تو طریقہ کار بھی دیا ہوا ہے. آپ بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو آپ رکھیں, وہ فالو کیا ہوگا نا, وہ دکھا دیتے یہ دیکھیے ہم نے اس کو نکال دیا, ختم. وہ تو آپ کے سامنے چیلنج نہیں ہوا نا معاملہ کے آیا. دیکھیے نو, آپ نے پلی لے لی نا, آپ نے کہا یہ میرا ممبر نہیں ہے. ونس یو ایڈمٹ میرا ممبر ہے اور پھر کیا میرا ممبر نہیں ہے, برڈن از آن یو. چلیں تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی نا. Challenge not to us. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party. میں صرف کل آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can نہیں ہو سکتا ہے کل آپ join against his party. نہیں آپ یہ تو پھر آپ نے ایک پروف دے دیا نا. اب بابر ایس احمد صاحب کے لیے بھی پروف دے دیں کہ انہوں نے فلاں پارٹی جوائن کر لی, بات ختم. اب یہ آپ کے دیکھیں معراج محمد خان صاحب تو شاید از پاسڈ ہوئے, عبدالعزیز خان صاحب ہیں پارٹی میں, چھوڑ گئے تھے. میں معراج محمد خان صاحب کی ہی اگزامپل دینے والا تھا. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. تو آپ کی پارٹی میں آ گئے نا, he left. آپ کی پارٹی میں آ گئے نا, تو یہ نام آپ نے لکھے ہوئے نا. اب یہ فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں یا چلی گئی ہیں؟ تو دیکھیے جن کے نام فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ میں کم از کم آپ ان کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے نا. کیوں ایک اس وقت معاملہ پارٹیز کی انٹرنل ورکنگ کا نہیں ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ آیا پارٹی کو پارٹی سمبل ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. چلیے یہ بات آگے بڑھائیں نا, یہ بات بار بار سن چکے. میری گزارش یہ ہے کہ ڈینائنگ پارٹی سمبل. آگے خان صاحب بھی ہرڈ دس نا, سمبل والی بات, وہ سمبل والی ہم نے بات سن لی. جب ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تو آپ اس کو کہتے ہیں چلیں اس کو چھوڑیں. 205 سیکشن 205 ہے, پھر اس کو بھی ڈکلیئر کر دیں انکانسٹیٹیوشنل الیکشن ایکٹ کا, کہ اگر آپ ممبر کو نکالنا چاہے خوشی سے نکالیے, ہم کب منع کر رہے ہیں. اگر ایک طریقہ کار ہے نکال لیجیے اس کے تحت. سسپینشن اور ایکسپلشن آف اے ممبر 205 میں لکھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو بھی اگنور کریں؟ آپ کہتے ہیں چلیں جی چھوڑیں اس کو. کیوں چھوڑیں ہم بھائی, وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں آتے, اگر صرف الیکشن کمیشن آتا تو پھر ہم چھوڑ دیتے اس بات کو. سر گزارش یہ ہے کہ اگر یہاں ایگریونس سیکشن 205 کا ہے, then he would have been a petitioner that he has been expelled. دکھائیے نا, میں نے یہ ایکسپیل کیا ہوا ہے. وہ تو کوشچن جناب کے سامنے ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پٹیشن میں کہہ دیا کہ میرا ممبر نہیں ہے نا, تو آپ کے کہنے سے بس کافی ہے. پارٹی سے اگر اس میں ان کا ڈفرنس ہے تو پارٹی کو سو کرتے and would have challenged that termination. میرا کوئی ڈفرنس نہیں ہے, میں تو پارٹی میں کام کرنا چاہتا ہوں. That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging my no, you under should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा. No, you don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law?
You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party हो, फिर को मैं ही deny कर रहा हूँ. तो देखिए, self serving argument तो नहीं चलेगा ना. ये चलिए खैर आगे बढ़े. We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली. Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is, objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी. Do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम. उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं. यहाँ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस में 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो. आज बाय दिस एक्ट ऑफ ईसीपी दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट, व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 7. साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना. ठीक है ना. अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को. इसको आर्टिकल 2(a) के तहत भी देखें ना. हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की. ठीक है, लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें. हाँ पढ़े मगर टाइम की बात है. फिर 2(a) the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है. सर इसमें ये कहा है wherein the wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए. नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives deprives millions of vote of their follower. Even ये बात million वाली बात हो गई ना. आगे बढ़ते हैं ना. जी. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the Constitution is equally a legal and a political document. So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as
not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Mizutin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. Ji. लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respondent number 10. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगी ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सूबाई इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तहरीक इंसाफ से. MPA स्वाबी वन से. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट. हम भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए. मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे हमें उनसे मालूमात चाहिए. हमसे पहले भी उधर लोग, अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं. तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी. तो फिर इलेक्शन कमीशन में. आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह. आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं. ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है. महमूद अहमद खान. मैं PTI में 2006. महमूद अहमद खान जी. मैं 2006 से PTI में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में. और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद PTI इस्लामाबाद जी ऑफिस. एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? as what? काम क्या करते थे आप? I joined them as an ordinary member. Then I was given the two tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. कोऑर्डिनेटर. तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? PTI में. मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा. दैट इज PTI असल. आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं. मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे लिस्ट का नहीं पता था. मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा. लेकिन देयर वाज नो इंफॉर्मेशन. नॉमिनेशन पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं. इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है. नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है. इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है. इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे. मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी,
I believe कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए, ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो. We want democracy in the country and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप भी बताएं, अपना तारुफ कराइए. ये कौन सी रेस्पोंडेंट? नंबर 11. नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान. आप किस पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ. मतलब कराची. आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ. मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी. उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची. उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी. जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई. 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर. उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी. लेबर पॉलिसी कमेटी. Then afterwards, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी. उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वाज डाइड 2 years back. नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान. तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट. सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ ऑफ मिस्टर नईमुल हक. जी नईमुल हक. और उसके उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड. नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे. मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन. अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ. और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अता बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे दीर अपर दीर. नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली. तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन. और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है. तो देन आई सेड ओके. और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है. नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा. चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह. आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग. कमर्शियल बिल्डिंग? नो, अपनी बिल्डिंग बनाई है पीटीआई ने. कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है. ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है. अच्छा, ठीक. तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी. और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नईमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीटीआई, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है. अच्छा, चलें. और कौन साहब में? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी. बिलाल अजहर राना. ठीक जी, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ. 25 रुपए से 96 को पार्टी बनी थी उसी टाइम. बिलाल अजहर राना. इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर. ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ. आप कब से पार्टी में? मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी, तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे. नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को.
उस वक्त से आप पार्टी में, कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी चाऊ में, कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अब अपने लोकल एरिया में हमने वार्ड, नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस, और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं, जिसमें लोग पीटीआई में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था, और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक, और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से, चक नंबर 312 गांव से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी 81 से, टोबा टेक सिंह से। यूसी 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए, लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन? मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में। ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गया? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर। मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था, और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था। इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। Mohammed, my lord, may I make short submissions on very short? Very short. I'll be as brief as I. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171. जी. As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें Constitution of PTI की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है, उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 आर नो लॉन्गर विद अस,
with us, meaning they've passed away. अच्छा. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left. party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active In the party? I believe he's still in the party. Ji, bilkul. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, ji. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to No, why are you showing its to relevance? demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है. जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था. देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया, अंसारी साहब थे, वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स. बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी पहले, ये बात की है जी. आई डू नॉट हैव the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी. नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58 जी. ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त. रीड, आई कांट सी योर नेम, रीड इट जी. इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल. इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है, और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं, और इसके आगे मैं आपका नाम कहाँ जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर. Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज. पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी. ये आइन जो है 99 में आया, और ये सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था? I'll have to get instruction on that. ठीक है, तो ये 61 हो गया. और कोई बात जी. और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे, कि जब शोकॉज देना होता है तो किस तरह शोकॉज दिया जाता है, पेज 63 पे. चलिए खैर, वो तो अलग बात है. और उससे जो किसको शोकॉज दिया है? दिस शोकॉज वाज टू मिस्टर हामिद खान. क्यों? He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power, as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations
which amount to malafide, whereas you are hereby charged. इसमें जो मैं जो ये कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice, or on page 65 I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना. Will not quit party under any मैं वो उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था. So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं 65? ये कि let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I show cause notice का क्या बना? I have जो public knowledge है जी खान साहब में उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं ये वो जजमेंट्स हैं, एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं, पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी. इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब, सिर्फ वो जुमला बता दें. जी मैं उस पे इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी. ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का, जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है, इसकी शिकायत मत वसूल करो. तो ये we went to the whole membership story multiple times and here where is it held that you're a member? जी in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 पेज बताइए. page 71 तो ये 10 से शुरू होता है जी. 11 में भी इसका डिस्कशन है और 13 पे आ जाता हूँ, 73 पे to cut it short. Paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की. There was an ICA and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, रिट होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी फाइल कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे क्या बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके client हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी पूछ लें. मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है. नहीं उसमें ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया. उसके बाद पीटीआई ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया. एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014.
First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है of the documents. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. सो बिल्कुल वो फिर ये कह मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर. Yes. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस. अब पेज 220 मगर अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं है. ये गलत ठीक नहीं है. अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना. जी बिल्कुल. तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज. तो आपसे सो गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो इन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम दे विल बी एबल टू शो द कोर्ट कि क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? जी. पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231, paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I along with a delegation of PTI members visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाज़ेह है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे. बट अभी मे बी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं. मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है. इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है. वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे. जी बेहतर. अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो ये करा. तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें. मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई. करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है. जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूँ. 215. अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है. आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया. आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू. और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी ज़मीन में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना पीटीआई के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी करेक्ट छोड़ें. दूसरा पॉइंट बताएं. उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें. आफ्टर
he announces. ये actually क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया point, I will not take more than 30 seconds. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books? जी, page 100 of the petition. Page 100. जी. जी, ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel. नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15. As the case may be, at the notified polling day, at the polling venue, after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है. वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता. मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है. ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है. अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट. आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी. या बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं चीजें. जी, 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की. उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता. मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी. I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का, तो वहीं पर रहना चाहिए था. ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन. ये जो पिटिशन इन्होंने फाइल की पशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं. बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये कौन है आपके साथ जो खड़े? my colleague Badr, he's been very kind and helpful and also maybe he's not neither kind nor helpful, because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की, उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की. वो एक्चुअली tells me, वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, चेक तो कर लें. जी, बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है. बट नहीं, वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है. उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है. नहीं जी, ऐसा नहीं. जो मैं Sorry, वो जरा on a lighter note था. I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. Just point out. नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया. सर्टिफिकेट में नहीं है. 20 सर्टिफिकेट में. पैराग्राफ 20 में. 20 में बात आ जाए. एक सेकंड. नहीं, पेज बता दें पिटीशन का. पेज 38. कैंसिलेशन मेंबरशिप को भी बता दें. पैराग्राफ 20 में पढ़ें. That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that the petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019,
and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmit its result along with all required documents including Form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसी ज़मीन में इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया पेज 50 पे देखेंगे जनाब certificate. Lordship, I've just received पेज 50 पे जो सर्टिफिकेट है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court, वो तो बात सही है उनकी. Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक. मैं अभी बता देता हूँ जी. एंड पेज 602 पे जनाब फैसला इसका, इसकी पिटीशन लिखी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी. And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज़ है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी. Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act 2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें. और ये पिटीशन भी बता दें किस पेज पे है? The petition was 585 सर. जो नहीं इसका ये जो 11 इसमें are you sure? अच्छा अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटीशन में ने क्या मांगा था? तो प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब. On page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Again, it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate
of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice, hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. Ji. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour's... When you use the word Constitution, just clarify. PTI or Pakistan? PTI Constitution, my apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बता देता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. नहीं, apologies. I think there's a लास्ट 2 points सर. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या अफिलिएशन एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? So I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं जी, general elections. I've not understood the point. Sorry. It was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी 3 consequences थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the I cannot answer that. लेकिन एक और सवाल में जब Badr was kind to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना. जी, ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers,
the commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से, खैर ये तो ओके। और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सब सेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सब सेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट। बाकी अटेंडेंस। और इसी तरह से सब सेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं. The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed, and it needs to be empowered. Thank you, coach. Thank you. किधर है? जी सर, आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से, पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले। किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है। ओके। जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था, तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था। तो he's earned his keep. Always more than grateful. Thank you. Eat anything, my lord? I just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. Including, my lord, including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes of chronology first? My lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your lordship's time. Ansab ko bhi dijiye. Ji. I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें। My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties, 13 or 30? 13 जी, they have been आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, बट 13 सबूत है 13 का सर, देयर इज एन ऑर्डर। 13 का एक तो हमने खुद देखा था, ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल Pakistan Muslim League. Just place a copy of the order before your lordship. Where they are all being done by one order or 13 orders? By one order. ये order हमें दिखा दें। जी सर। So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों, इसी के पर कल लिखा। Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. नाम तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे। पहले नाम। If your lordship will see after the name of the parties, your lordship see on commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All Pakistan. कुछ और आपने हमें दे दिया, इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? क्या दिया? ये किस चीज, ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, the order dated 4th of January 2024. इधर किधर है पार्टीज के नाम? Sir, if your lordship see the heading on commission's notice, and then your lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं ये, अच्छा अभी ये कुछ और दिया था। अच्छा ये वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और
नाज़रीन बराह रास्त आपको दिखा रहे थे कि चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत जारी थी। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। नाज़रीन आपको बराह रास्त दिखा रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत जारी थी। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान के केस की समाअत जारी थी। अकबर बाबर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। नाज़रीन आपको बराह रास्त भी दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के खिलाफ समाअत जारी थी। अच्छा, okay, ठीक है, got it. My lord. Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see, file election commission case order. If that in a number of cases the election commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which I have to move it. The election commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your lordships saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your lordships. Election commission's petitions have been entertained under Article 185. Two quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. और आपने एक reported judgment भी तो दिया था. जी सर, दो दिए थे. कल दिए थे ना आपने? जी सर. वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में. जी सर. हाँ. वो भी लगे हुए हैं. 2 unreported भी दिए थे. वो अलग से दिए थे, जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है. सर, the short point to be made in that respect is that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something. My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again, because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with 2 orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had elected... You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. This is, my lord, PLD 2008, Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008, Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the... What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date
and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है डॉक्यूमेंट जी, we have given वो मार्क कर दीजिएगा, I don't agree. जी. So this is the chronology, my lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship you want knows to the launch reason. an attack, or you withdrawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले दिखा रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत जारी थी। आपको बता रहे हैं कि समाअत पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से जारी थी, जबकि मुख्तलिफ एडवोकेट्स ने अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान का केस जारी था। आपको बताएं कि अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन शाह एडवोकेट के दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं। आपको बताएं कि अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन शाह के दलाइल जारी थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ये समाअत जारी थी, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच में शामिल थे। आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि शुरू में पार्टी आइन में पैनल नहीं था। नाजरीन, आपको दिखा रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत बराह रास्त जारी थी। अकबर एस बाबर अपने दलाइल दे रहे थे, जिनका कहना था कि शुरू में पार्टी आइन में पैनल मौजूद नहीं था। आपको बराह रास्त भी ये समाअत दिखा रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। बराह रास्त आपको समाअत दिखा रहे थे, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा थे। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल दिए। उसके अलावा अकबर एस बाबर ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अकबर एस बाबर का कहना था कि शोकाज नोटिस दिसंबर 2019 में दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल भी जारी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।